everybody, welcome back to my channel. First of all, I would like to apologize if you hear any background noises. There's a lot of construction going on upstairs, and I mean there's nothing I can do about it, honestly. I will try to edit most of it out while I'm editing this video, but I'm not that great at editing, so fingers crossed. Today's video is going to be all about Mana Beauty. So you guys had been on my case, you had been requesting that I try out some of their products. So I went ahead and ordered a few of their products, which are right here. So I ordered their Rose Magic Lip and Cheek Tint, and I ordered their Gold Dust Liquid Highlighters. Now, these two I paid for myself because I just wanted to review them for you guys. You guys know I love my tints. And then Mana Beauty was kind enough to send me two more products to try out and review, which are a recent launch. So they sent me their Skin Focus Double Fix Mousse Foundation along with their Dark Goddess Double Wear Contour Cream Contour product. I have worn them plenty of times. I have formulated my thoughts regarding both these products, actually all these products, and today I'm going to give you my full review. I have put these to the test and oops, I feel like I'm kind of all over the place today. So I've put these to the test and we're going to talk about them. I'm going to demo how I use these on my face, and yeah, let's get started. For those of you who follow me and are familiar with my channel, you guys already know that I have extremely dry skin. Like, my skin is a desert, alright? To the extent that I even get like small eczema patches like around my eyes on days when it's just at its worst. So for me, using a product like this was a little bit tricky, and I will explain why. Now, I would compare this mousse foundation as far as stiffness, formulation and pigmentation is concerned to the Kryolan TV paint sticks. So this is a really pigmented product. I think this can last you well over a year even if you're using this daily, just because you need the tiniest bit. Except Mana Beauty is a very organic brand, so they pride themselves in not adding any preservatives or any chemicals whatsoever, any parabens, etc. in their skincare as well as their makeup. Now, on the plus side, you are getting all the good ingredients in your makeup and skincare, but the downside to that is that these products do not have a very long shelf life. So even on their packaging, they advise that you finish up the product within a year and then not keep it longer for that. Honestly, अगर आप लोग मेरी माने तो I would suggest कि आप इसको जितना जल्दी ख़त्म कर सकते हैं कर लें, ताकि product spoil ना हो जाए. Especially because we live in such a hot climate, it's not the best idea to leave these products which don't have any preservatives in them hanging around just like that. I do not store these in a refrigerator. You can absolutely go ahead and do that. That will definitely increase the lifespan of the products. I don't do that myself. I live in a basement, so यहाँ पे इतनी गर्मी और इस तरह से धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती, तो I just leave them on my vanity and that's that. When I ordered the Mana Beauty Rose Magic Tint, I placed the order when they had a sale going on, and I got this within a few days. And from the time I opened it, इसके अंदर already एक smell सी है, which is not a very pleasant smell. So I was a little concerned about that. I even DM'd the page to ask them कि भाई अब इसका मैं क्या करूँ, because I don't know if I'm supposed to be using this. And because it was brand new, they said that I don't actually remember what they said, but they said something about storing it in a fridge and just not keeping it in a very hot environment, and they didn't say anything about replacing this or anything of the sort. So anyways, I actually opened it and like tried to peek inside and just make sure कि इसके अंदर कोई fungus है कुछ ना हो, but I mean, I don't know. It doesn't smell the best. ये smell इसमें नहीं है, मेरे Gold Dust Highlighter में नहीं थी, सिर्फ इस product के अंदर है. But you guys, I still want to, like, I went ahead, used it in a lot of Instagram tutorials and whatnot because I wanted to show you how to use this product. I really do love it. I really do love it, except a lot of girls DM'd and complained about the same thing कि Mana Beauty के products में smell बहुत जल्दी आ जाती है, ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं, and इसकी वजह I've already told you, ये लोग preservatives नहीं add करते products में. So if you buy from them, just try to use up the product as soon as possible. हो सके तो fridge में भी उसको store कर लें ताकि उसके अंदर bacteria grow होने के chances कम हों. Alright, having said that, let's move back into the foundation. Now, I have really dry skin, so whenever I use a product that is this thick, I have to make sure that I prepare my skin the best way I can. So what I like to do is, I have recently been trying the Jasmine Dew from Primary Skin. Now, this is a face mist which has hyaluronic acid, it has jasmine, green tea and aloe. So
some really good ingredients, and it just sort of juices up my skin a little bit. You guys know पहले मैं पानी से मतलब ठंडा पानी का स्प्रे करती थी अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले. जब से मैंने ये प्रोडक्ट डिस्कवर किया है अब मैं ये लगाती हूँ. सो यू जस्ट स्प्रे दिस ऑन योर फेस. Even smells nice, smells very refreshing, and you just let it sit in your skin, do its magic. It's not going to be a huge difference, I'll tell you that. Now once I've applied that on my face, I go in with my moisturizer. Now I use Ungentum moisturizing cream only under makeup. ये मैं और कभी नहीं लगाती, सिर्फ जब मैंने मेकअप करना होता है मैं लगाती हूँ. This is really good for dry sensitive skin, especially if you are eczema prone. So it's very inexpensive. You can get this from any local drugstore. A lot of people have mentioned, especially those with combo skin have mentioned कि उनको ये बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती. It's not meant for combo skin, it's meant for dry sensitive skin. And I like to just rub some between my fingers and then apply a nice generous layer on my face. Now this moisturizer is going to seal in all the goodness from the primary face mist, and it's going to make sure that the hydration that I've already applied on my skin sort of locks in. Now if I was using this in the daytime मैं पहले कोई अच्छा sunscreen लगाती, moisturizer, sunscreen, फिर foundation, but क्योंकि सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने बाहर नहीं जाना, I'm going to move straight into the foundation. If you guys want to use a primer, go ahead and do that, but मैं daily use के लिए primer नहीं इस्तेमाल करती अपने चेहरे पे. अब ये foundation की consistency काफ़ी thick है, like काफ़ी ज़्यादा thick है. Like I said, I would compare this to the Crayola TV paint sticks. So what I like to do is I like to thin it out on the back of my hand. उसके लिए मैं लेती हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ये है जी 24 कैरेट गोल्डन रोज़ सीरम. You guys know मुझे ये बहुत पसंद है. मैंने इसको माना ब्यूटी के गोल्ड डस्ट हाइलाइटर के साथ भी मिक्स करने की कोशिश की थी. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने थोड़ा सा गोल्ड डस्ट हाइलाइटर लिया था एंड देन उसके अंदर मैंने फाउंडेशन मिक्स की थी. आई लाइक्ड द रिजल्ट, बट आई फील लाइक ऑन माई ड्राई स्किन वर्किंग विद एन ऑयल इज़ अ बेटर आइडिया. ये गोल्ड डस्ट हाइलाइटर बाय द वे जो मैंने मिलाने की कोशिश की थी फाउंडेशन में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं पसंद. सो ये मैं आप लोगों को बता दूँ, दिस प्रोडक्ट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी. थोड़ा वाटरी ज़्यादा था, तो जब मैंने लगाया तो मुझे लगा जैसे मेरे नीचे की जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी सेपरेट हो गई है. आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक आई ट्राइड वर्किंग विद दिस अ कपल ऑफ डिफरेंट वेज. आई मिक्स दिस इनटू माय फाउंडेशन एंड अप्लाइड इट. आई यूज दिस ऑन टॉप ऑफ माय फाउंडेशन. बोथ वेज आई फील लाइक द रिजल्ट वाज जस्ट एवरेज एट बेस्ट. तो मुझे ये प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा. दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट आई डोंट रिकमेंड फ्रॉम आना ब्यूटी आउट ऑफ द फ्यू दैट आई हैव ट्राइड. So I'm going to stick to the 24 carat serum instead. And what I do is इसके मैं दो कतरे लेके अपने पाम पे डालती हूँ. सो जस्ट लेट्स 2 drops. एंड ये फाउंडेशन जो है मैं कोई भी आपके पास अगर बफिंग ब्रश हो तो आप यूज़ कर सकते हैं. मुझे ये वाला पसंद है, मुझे मेरे मेकअप स्कूल से मिला था. इसके ऊपर सिर्फ स्कूल का नाम लिखा हुआ है, कोई ब्रश नंबर साइज़ नहीं है, बट कोई भी बफिंग ब्रश जो आप लोगों के पास हो. व्हाट आई डू इज़ मैं ये डायरेक्ट फाउंडेशन के अंदर लेके जाती हूँ एंड आई ट्राई टू गेट द प्रोडक्ट ऑन द फाउंडेशन. ये बहुत स्टिफ प्रोडक्ट है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले रही हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रश पे आएगा नहीं. So what I do then is I really press the brush into my palm. I saturate it with whatever oil we applied on my palm. I try to mix the oil with the foundation and just get a really good mixture out of it. इस ऑयल से ना इस फाउंडेशन को हल्की सी स्लिप मिलती है, सो ताकि जब आप इसको अपने चेहरे पे लगाओ तो इसका वो थिकनेस जो एक वो थिक कंसिस्टेंसी है वो ये थोड़ी सी डाइल्यूट कर देता है. एंड क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो ये इसके बगैर इस्तेमाल करने का मेरे पास कोई चारा नहीं है. अगर आप लोगों की स्किन ऑयली है तो देन बेशक आप ऑयल से मिक्स ना करें. आप लोग स्नो ग्लोब सीरम ट्राई कर सकते हैं ब्यूटीफाई बाय आमना का, वो जेल बेस्ड है. आई थिंक उससे आपको बेहतर स्लिप मिलेगी इन योर फाउंडेशन. एंड देन व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट अप्लाई दिस. I start from the center of my face. अच्छा, फाउंडेशन का जो शेड उन्होंने मुझे भिजवाया था ये है डॉन वार्म गोल्डन MF03 एंड ये शेड मेरे लिए मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, लेकिन आउट ऑफ इनके 3 कलर्स जिन्होंने लॉन्च किए थे यही एक शेड है जो मेरी स्किन टोन से थोड़ा बेहतर जा रहा है.
लेकिन ये भी कुछ तकरीबन 2 शेड्स लाइट है मेरी स्किन टोन के हिसाब से. Mana Beauty did say that they're going to launch more shades in the future. This is a completely hand blended formula. जिसकी वजह से इन्होंने अभी सिर्फ 3 शेड्स लॉन्च किए हैं, which honestly is, I mean, they need to work on their shade range. And I'm just buffing this into my face. अभी मैं हाफ साइड कर रही हूँ फेस की ताकि दूसरी जो साइड है वो मैं आपको दिखा सकूँ फॉर कंपैरिजन. यानी हमने एक बहुत थिन लेयर ऑफ फाउंडेशन लगाया है. Okay you guys, so this is the side of my face which has the foundation on, and then this is the side of my face without foundation. This is the thinnest layer of the Mana Beauty foundation that I could apply on my skin, and it's just sort of evened everything out. You can see the texture. Let me come close and show you guys what this looks like without any other product. Wait. This is the side of my face that has the foundation on. As you can see, it has blended in really nicely into my skin. And जो मेरी दूसरी side है ये वो है जहाँ पे अभी तक कोई foundation नहीं लगी हुई. This is just my bare skin with moisturizer. And you can see how the Mana Beauty doesn't really look like it's sitting on top of my skin. So now I'm going to take a little more product and I'm going to go into the second half of my face. Again, blending it in with the oil. And now we will start buffing this into her skin. Again, you guys, I'm sorry. मैं चिट्टा लगने की कोशिश नहीं कर रही. इट्स जस्ट कि फाउंडेशन जो उन्होंने मुझे भिजवाई नहीं है मेरी स्किन टोन से काफ़ी लाइट है. अनदर थिंग आई कुड हैव डन वाज कि मैं इसको मिक्स कर लेती थोड़ी सी कॉन्टोर कलर के साथ, लेकिन मैं आप लोगों को कॉन्टोर प्रोडक्ट डिफरेंट मतलब अलग से दिखाना चाह रही थी और ये फाउंडेशन अलग से दिखाना चाह रही थी विदाउट मिक्सिंग द टू. ऑलराइट, वंस द फाउंडेशन इज़ ऑन आई समटाइम्स टेक अ ड्राई ब्यूटी स्पंज. दिस वन इज़ फ्रॉम Zay Beauty. And I just sort of take it all over my face, just like pressing and tapping to make sure that the foundation is really well blended, kahin pe patchy nahi hai. Okay you guys, so foundation is on. I still have a lot left on the palm of my hand, which I'm thinking I will take down my neck. वरना ज़रूर आप लोगों ने मुझे comments में बताना है कि आपकी गर्दन और आपके चेहरे में 4 टोन का फ़र्क है. Alright, now they've launched a concealer as well, which has a really pretty pinky peachy tone to it, but they did not send me that product. So what I'm going to do is I'm going to use just this foundation as concealer. And what I'm going to do is I'm going to take some on a smaller brush and just picking up the product I have on my palm already. And using it on a smaller brush just means that I'm going to get a more precise application. And I'm just going to use this to conceal my under eyes. This is such a pigmented product that you can, I'm not even picking up from the jar, like मैं अपने हाथ में जो मैंने पहले से लेके रखा हुआ था मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ. And you guys can see that even that is so brightening, like wow. Now we're going to move towards the contour product, which comes in a smaller jar. And I'm just going to take the same brush that I used to apply my foundation, pick some up, build up slowly. And I'm kind of going to take this contour product over my cheek as well, क्योंकि इससे थोड़ा जो मैं बहुत पेस्टी वाइट लग रही हूँ वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा. Alright, next step we're going to go into the Rose Magic Lip and Cheek Tint, and oh my god you guys, I love this product so much. इसको सिर्फ अप्लाई करने का अगर आप लोग तरीका सीख जाए ना तो ये बहुत ही it's a beautiful product and it stays on really well. Oh my god you guys, my camera battery ran out. I've kept it on charge for a while and अब इतनी हो गई है कि I think ये वीडियो मैं कंप्लीट कर सकूँगी. And because बैटरी चार्ज हो रही थी और मैं स्टूडियो में थी तो मैंने थोड़ा सा आई मेकअप कर लिया. आई यूज्ड द हुदा ब्यूटी
what is this called? Topaz Obsessions palette for this look. And I used some new BH Cosmetics brushes. So yeah. Anyways, moving back to Mana Beauty. बाल बंद रहने तो खैर है, वैसे ही फटे हुए होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. अच्छा जी, सो माना ब्यूटी का अब हम ये रोज़ मैजिक टिंट इस्तेमाल कर रहे थे जब बैटरी मर गई. मैंने लिटरली इसका एक इतना सा ड्रॉप, लाइक इट्स नॉट इवन अ फुल ड्रॉप, मैंने अपने लिप्स पे लेके लगाया था. एंड यू जस्ट प्रेस इट इन विथ फिंगर्स एंड रब योर लिप्स टुगेदर. जो होंठ रब करने से इसके अंदर के जो पिगमेंट पार्टिकल्स हैं ना, वो सॉर्ट ऑफ अच्छी तरह इवनली डिस्पर्स होते हैं एंड वो कलर छोड़ते हैं आपके लिप्स के ऊपर. सो सिर्फ लगा के प्रेस करने से फ़र्क नहीं पड़ता. Really rub your lips together and that is what's going to give you that beautiful stain. This almost looks like a lipstick. Alright, I'm also going to use this on the cheeks. और cheeks के ऊपर मैं literally एक कतरा बस सिर्फ इतना. एंड मैं इस्तेमाल करती हूँ एल्फ का स्मॉल स्टिपलिंग ब्रश. यू गाइज, ब्रश को मैं अच्छी तरह से इसके अंदर सॉर्ट ऑफ स्वर्ल करती हूँ बिकॉज ये बहुत पिगमेंटेड है. एंड देन आई लाइटली गो ऑन टॉप ऑफ माई cheeks and you guys can see the color payoff. And just really blend it in. Thoda I go in with fingers just to make sure there are no harsh edges and it gives you this beautiful rosy flush to your cheeks. इसको उंगलियों से इस्तेमाल करने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो सिर्फ इतना वाटरी है ये फॉर्मूला कि वो लिटरली सिर्फ एक फैल जाता है, गंद मचाता है, आपके सारा मेकअप जो है वो ख़राब कर देगा. आई हैव ट्राइड इट, आई हैव रिग्रेटेड इट, आई हैव हैड टू डू माई मेकअप अगैन. सो इसलिए फेयर वार्निंग, जस्ट यूज़ अ ब्रश टू अप्लाई दिस एंड रियली लाइक, कैन यू सी लाइक द पिगमेंट ऑन माई हैंड? या you can even take like the tiniest bit on the bridge of your nose. And yeah, you guys, so if you're into the kind of look where you sort of go pink on your chin as well, I personally am not, लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद है, इसलिए just थोड़ा सा हम chin को भी rosy सी एक look दे देते हैं. And yeah, you guys, so this is the Mana Beauty lip and cheek tint. Beautiful color. This is Rose Magic. Once again, really love this product. Just make sure you shake it really well before you use it. And अब हम आ जाते हैं, मेरी नज़र में ये थोड़ा सा बेकार प्रोडक्ट ही रहा है. This is the Gold Dust Highlighter. इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. If you apply one drop on the back of your hand and then you really start to blend it in, आप देखिएगा थोड़ी देर में ये प्रोडक्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा. लाइक ना ये कोई शीन छोड़ता है, एटलीस्ट ऑन माई स्किन, ना ये कोई शीन छोड़ता है, ना इसकी वो ग्लिटर स्पेक्स उस तरह से नज़र आते हैं. इट जस्ट लिटरली disappears. Like, can you see a difference? This is where I applied the drop and this is just my hand itself, and there is absolutely no difference between both sides because ये product कुछ नहीं करता. So anyway, or at least that has been my experience with this. Okay guys, so highlighter तो मैंने यूज़ करना है, तो I'm going to use चांद from चांद तारा. This is Zay Beauty's highlighter and ये उनका वो cream वाला highlight है जो सिर्फ मैं अपनी finger पे लेके I am going to press this on the high points of my cheeks. Can you see this glow? Yeah, love that. I hope you can't hear that. I really hope you can't hear that. बाहर बच्चे खेल रहे हैं और अजीब व गरीब आवाज़ निकाल रहे हैं. अच्छा जी, ये वो टिंट है जो कि अब सेट हो गया है एंड इसको मैं उतारने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये सेट हो गया है तो अब ये उतरेगा नहीं जब तक मैं हाथ नहीं धोती. सो वंस यू लेट द टिंट रियली सेट ऑन योर फेस, यू गाइज, इट विल नॉट बच. अगर आपकी ऑयली स्किन है या आप you sweat a lot or you feel like this will not stay put on you, then what you can do is you can go on top of this with a powder blush or something of the sort that will really set the product. I will set the center of my face because I do have a lot of pores around my nose area and I do tend to sweat a lot. Okay guys, so this is the finished look using all Mana Beauty products. Now I'm going to open my hair and show you the final look.
Okay, guys, so my final thoughts on the Mana Beauty products are I love this foundation and contour product. Love both of these very, very much. मैं इनको एक तरीके से इस्तेमाल करती हूँ एंड आई ऑलवेज मिक्स दम इन विद ऑयल आई मेक श्योर कि मैं ऑयल इस कंटेनर के अंदर ना डालूँ इवन द ब्रश दैट आई यूज़ फॉर दिस लाइक नॉर्मली आई ऑलवेज गो इन विद अ वेरी क्लीन ब्रश क्योंकि मैंने कल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर माना ब्यूटी की एक स्टोरी डाली थी तो ये वो ब्रश है जो मैंने कल इस्तेमाल किया था एंड आई went in with the same brush again, but today I'm going to clean this brush and the next time I go into this product it's going to be with a clean brush. So ये छोटी छोटी चीज़ों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ. I suggest कि आप लोग भी रखें. So yeah, if you are willing to add that extra effort when using this foundation, because again it's extremely pigmented, it's very thick consistency. So to get it to look as natural and wearable as this, you need to put in a little bit more effort. I think that effort is worth it just because you can see the overall result is actually quite lovely. But if you are someone who has a more no-fuss approach towards makeup, then maybe doing all of this is not going to be something you prefer. Having said that, I know not all of you will be able to try this foundation, which is the most unfortunate thing in the world. And the reason is that inki shade range right now at this moment is very limited. इनके पास एक आइवरी शेड है, एक ये वाला शेड है जिसको ये कंपेयर कर रहे थे FS45 से फ्रॉम द क्रायोलिन टीवी पेंट स्टिक. आई थिंक ये FS45 से भी थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, एटलीस्ट ऑन मी. एंड देन दे हैव अ मोर पिंकी टोन फाउंडेशन शेड. सो अगेन they really need to expand their shade range to allow more of us to be able to enjoy this product, and I really hope they do that soon. But if you really want to try it and you don't have your shade in this, then I suggest you mix in a little bit of this contour product with the foundation and you sort of custom match your shade yourself. I love this Rose Magic tint, even though mine has a bit of a smell to it. I will try to use this up. I love tints anyway, and I know I will use this up hopefully in a couple of months. Again, just really shake the bottle because it's a very watery formula and इसके सारा जो pigment है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है. So make sure you really shake it up before you squeeze some into this dropper. So this is it for today's review. I hope you guys found this helpful, and if you did, please like this video, give it a thumbs up, subscribe to my channel, and please ring the notification bell so you are updated every time I post new content, you guys. I'm trying to be more regular with my videos. I don't know if you guys have noticed that. And also do follow me on Instagram if you haven't already. I post more frequently on Instagram than I do YouTube. My Instagram handle is @CheyenneHeather. I hope to see you guys on my Instagram page as well. And yeah, you guys, so let me know in the comments below what you would like to see more of, and I will be happy to review products for you, do tutorials, all the good stuff. So have a great day, you guys. Love you all so much.